My dear students, now we are moving on to discuss scope of freedom of speech and press. हम अब डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसका स्कोप क्या है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, a question arises as to what is meant by the term scope. Dear students, scope means potential. Potential क्या है और इस ज़िमन में अलेक्जेंडर हैमिल्टन क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं. The liberty of press is the right to publish with impunity, truth with good motives for justifiable ends, though reflecting on government magistracy or individuals. अलेक्जेंडर हैमिल्टन कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली एक लिबर्टी है और विद एग्जम्पशंस के साथ ट्रूथ को पब्लिश कर रहा है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मैजिस्ट्रेसी के ऊपर आए, गवर्नमेंट के ऊपर आए या इंडिविजुअल्स के ऊपर आए. यहां पर ये जो अल्फाज हैं लिबर्टी, इंप्यूनिटी, मोटिव्स और जस्टिफाइबल एंड्स, इनके मीनिंग्स को देखते हैं. जहां पर कहीं आपका वास्ता लफ्ज लिबर्टी से पड़ जाए तो इससे मुराद ये है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस. अगर कहीं लफ्ज इंप्यूनिटी आ जाए तो इसका मीनिंग है एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट. अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो कह रहा है कि लिबर्टी से मुराद ये है कि पब्लिश करना ट्रुथ को विद एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट. मोटिव क्या होता है? मोटिव इज बेसिकली इंटेंशन, या इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. एंड मोटिव इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड. जस्टिफाइबल मीन्स रीजनेबल, एक्सेप्टेबल. इसका मुराद है कि एज पर द लॉजिकल स्टैंडर्ड्स चीज जो है या कॉन्सेप्ट जो है या एक्ट जो है दैट इज एक्सेप्टेबल. यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ एंड्स. एंड्स मीन्स पर्पसेस. अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो बात की, अगर इन मीनिंग्स को हम उसमें इंसर्ट करें या इनकॉर्पोरेट करें तो जो सेंस डेवलप होती है वो कुछ इस तरह से है. Thus, ladies and gentlemen, the freedom of press is the right to publish with exemption from punishment, truth with good intentions for reasonable purposes, though reflecting on government, magistracy or individuals. Dear students, freedom of speech and freedom of press are fundamental personal rights and liberties which are the cornerstones of democratic institutions. The liberty of the press is not confined to newspapers and periodicals, but necessarily embraces pamphlets, leaflets, and every sort of publication. My dear students, the right to speech is not limited to public addresses, pamphlets, or words of an individual, but it also embraces every form and manner of dissemination of ideas. Dear students, the privilege of free speech carries with it freedom of choice as to the mode of expression that may be employed. It includes of mechanical and manual instrumentalities of communication such as press and banners as a natural and appropriate means of conveying information on matters of public concern which may be protected under the constitutional guarantee of free speech and press. Dear students, ये जो freedom of speech है, इसमें आप कोई भी मीडियम जो है यूज कर सकते हैं. आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया पर जा सकते हैं. इट इज अप टू यू एंड यू मे एक्सरसाइज योर राइट ऑफ
freedom of expression, speech and press.